Types of dentin based on time of formation: primary dentin and secondary dentin. Primary dentin includes mantle and circumpalpal dentin. Mantle dentin first form dentin in crown underlying the dentinoenamel junction, peripheral outermost part of primary dentin. One co-fibers present, collagen fibers perpendicular to dentinoenamel junction and require matrix vesicle for mineralization. वहीं पे circumpalpal dentin, जो dentin prior to root completion form होता है वो circumpalpal dentin. Form the bulk of primary dentin, contain more mineral than mantle dentin. Highly phosphorylated protein present. Secondary dentin, adventitious dentin, dentin formed after root completion and contain fewer tubules than primary dentin. That is usually present in the tubules where primary and secondary dentin interface. Secondary dentin are formed throughout life. अब ये था बेस्ड ऑन टाइम ऑफ फॉर्मेशन. इसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर: पेरिट्यूबुलर डेंटिन, इंटरट्यूबुलर डेंटिन एंड प्रीडेंटिन. Peritubular dentin, dentin that surrounds the dentinal tubules, highly mineralized than intertubular dentin. It constricts the dentinoenamel tubules to a diameter of 1 micrometer near dentinoenamel junction. It is twice as thick in outer dentin than in inner dentin, but in decalcified section, the tubule diameter appear similar in inner and outer dentin because of loss of peritubular dentin. अब देखिए आप, intertubular dentin forms the main body of dentin located between dentinal tubules, and after decalcification, intertubular dentin is retained, whereas peritubular dentin is not. डिकैल्सिफिकेशन के बाद भी इंटरट्यूबुलर डेंटिन रिटेन होता है, बट पेरिट्यूबुलर डेंटिन नहीं होता है. प्रीडेंटिन इज नॉट मिनरलाइज्ड, लोकेटेड एडजेसेंट टू पल्प टिश्यू एंड इज 2 to 6 माइक्रोमीटर वाइड. कितना वाइड होता है? 2 to 6 माइक्रोमीटर. डेंटिन एसोसिएटेड विद एज चेंजेस, डेड ट्रैक्ट्स, स्क्लेरोटिक डेंटिन एंड रेपरेटिव डेंटिन. डेड ट्रैक्ट टर्म किसने दिया था? सर विल्फ्रेड फिश. In some cases, as a result of caries, attrition, abrasion, cavity preparation or erosion, the odontoblastic process may disintegrate and empty tubules may become filled with air. जो डेड ट्रैक्ट्स है वो ब्लैक दिखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट में एंड वाइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट. द डीजनरेटिव चेंजेस मेनली अपीयर इन एरिया ऑफ नैरो पल्प होल बिकॉज ऑफ क्राउडिंग ऑफ ओडोंटोब्लास्ट. डेड ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड एज इनिशियल स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोटिक डेंटिन. उसके बाद देखते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन. स्क्लेरोटिक डेंटिन को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट डेंटिन. Formation of sclerotic dentin is protective mechanism, resistant to caries and appear light in transmitted line and dark in reflected line. देखिए डेड ट्रैक्ट्स है वो दिखाई देता है ब्लैक इन ट्रांसमिटेड लाइन एंड वाइट इन रिफ्लेक्टेड लाइन. वहीं पर जो स्क्लेरोटिक डेंटिन है अपीयर्स लाइट इन ट्रांसमिटेड लाइन एंड डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइन. प्रिवेलेंट इन ओल्डर इंडिविजुअल्स स्पेशली इन रूट्स. स्क्लेरोटिक डेंटिन है वो स्लो प्रोसेस से फॉर्म होता है, स्लो केरियस लीजन. तो क्या फॉर्म करेगा? स्क्लेरोटिक डेंटिन. नेक्स्ट है रेपरेटिव डेंटिन. रेपरेटिव डेंटिन के दूसरा नाम है टर्शरी रेस्पॉन्स और रिएक्शनरी डेंटिन. Reparative dentin form in response to extensive abrasion, caries, bacterial toxic products and chemicals from restorative materials. देखिए सेकंड मॉडरेट और एक्सटेंसिव प्रोसेस उससे फॉर्म होगा रेपरेटिव डेंटिन. Characterized by having fewer or more twisted dentinal tubules than normal dentin. Dentinal tubule से कम होगी और twisted होगी. Sometimes it contains cellular inclusion within the matrix and it is known as osteodentin. Osteodentin seen in vitamin deficiency during development. अब देखिए अब dentinoenamel junction. Dentinoenamel junction usually scalloped होता है and convexity होती है वो फेस करती है towards dentin. Lack of normal scalloping of dentinoenamel junction passes of many dentinal tubules into enamel. Formation of irregular dentin, increased tendency to form pulp stones and hypermobility of temporomandibular joint resulting in deep dislocation of jaw are feature of Ehlers-Danlos syndrome. क्या फीचर्स है Ehlers-Danlos syndrome के? Lack of normal scalloping of dentinoenamel junction, passage of many dentinal tubules into enamel, formation of irregular dentin, increased tendency to form pulp stones, hypermobility of TMJ. वही रिजल्ट करती है डिस्लोकेशन ऑफ जो. Cemento-dentinal junction, smooth in permanent teeth and scalloped in deciduous teeth. Corpse fibers, initial dentin deposition along cusp tips. जो corpse fibers इसको बोलते हैं initial dentin deposition along cusp tips. डेंटिन है, डेंटिन की कुछ प्रॉपर्टीज है. इलास्टिक एंड सब्जेक्ट टू स्लाइड डिफॉर्मेशन, हार्डर देन बोन, सॉफ्टर देन एनामल बिकॉज ऑफ इट्स लो मिनरल सॉल्ट्स. इट इज मोर रेड्यूसिंग देन एनामल. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है. कोर्स ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इज स्ट्रेट नियर रूट टिप एंड अलोंग द इंसाइजल एज एंड कस्प. जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का कोर्स स्ट्रेट होती है नियर रूट टिप एंड इंसाइजल एज एंड कस्प. वहीं पे इन क्राउन दे फॉलो एज शेप डेंटल कर्व. क्राउन में एज शेप डेंटल कर्व को फॉलो करती है. द फर्स्ट convexity of edge-shaped curve is directed towards apex of tooth. The dentinal tubules have lateral branches of dentin is termed as canaliculi or microtubules. लेमाइनल लिमिटेंस क्या होती है? ऑर्गेनिक लाइनिंग ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल. जो डेंटिनल ट्यूब्यूल है उसकी जो ऑर्गेनिक लाइनिंग है उसको बोलते हैं लेमाइनल लिमिटेंस. इंटरग्लोब्युलर डेंटिन है हाइपोमिनरलाइज्ड जोन है कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ कैल्कोस्पेराइड्स. इट्स अ डिफेक्ट ऑफ मिनरलाइजेशन. इंटरग्लोब्युलर डेंटिन क्या है? डिफेक्ट ऑफ मिनरलाइजेशन, हाइपोमिनरलाइज्ड जोन. द डायमीटर ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इज मोर एट पल्पल लेयर 3 to 4 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर देन आउटर एंड 1 माइक्रोमीटर. जो डायमीटर है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का वो आउटर एंड पर 1 माइक्रोमीटर है, वहीं पे पल्पल एंड है उधर 3 to 4 माइक्रोमीटर है. एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स विद डेप्थ में जाते हैं अपन, वहाँ पर इंक्रीज होती है नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीज इन डेंटिन वेटनेस. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इंक्रीज होगी बट डेंटिन वेटनेस इंक्रीज होगी. बॉन्डिंग टू डीपर डेंटिन मोर डिफिकल्ट देन टू सुपरफिशियल डेंटिन. जो डीपर डेंटिन है उसका बॉन्डिंग डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ वेटनेस.
द रेशियो ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑन द पल्पल एंड आउटर सरफेस ऑफ डेंटिन इज अबाउट 4:1. ओके, 4 माइक्रोमीटर डायमीटर इधर आउटर पे, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है, रेशियो आता है 4:1. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का रेशियो है पल्पल एंड आउटर सरफेस पर, तो पल्पल सरफेस पर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है 4 गुना है, और आउटर पे तो उनका रेशियो आता है 4:1. Near the pulpal surface of dentin, the number of dentinal tubule per square millimeter vary between 50,000 to 90,000. There are more tubules per unit area in crown than in root. Root के कंपेरिजन में crown में more tubules होती है.